Measurement of variability. Variability refers to extent to which the score in a distribution differ from each other. वेरिएबिलिटी जो है इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो एक्सटेंट जहाँ तक जो स्कोर्स हैं इंडिविजुअल्स के वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं. An equivalent definition, this is easier to work with mathematically, says that variability refers to extent to which the score in a distribution differ from their mean. उनके मीन से कितने ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो डिफर हैं उससे काम लिया जाता है. इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लैकिंग इन वेरिएबिलिटी, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरिएबिलिटी में कम हो रही है, we may say that it is homogeneous, note that opposite would be heterogeneous. We will discuss four measures of variability for now: the range, mean or average deviation, variance and standard deviation. वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए चार तरीके इसमें डिस्कस करेंगे हम. रेंज का है, मीन और एवरेज डेविएशन का है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का. रेंज. Probably range is the simplest method to find variability of the sample. This is the difference between the largest maximum, highest and smallest minimum, lowest observation. Range is equal to highest value minus lowest value. Example, the range of the Salim's 4 test scores. सलीम के 3 टेस्ट में जो स्कोर्स थे वो कितने, 3, 5, 5 और 7. इसमें हाईएस्ट वैल्यू 7 है और लोएस्ट वैल्यू 3 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 4 होगी. Example, consider the previous example in which the result of the two different classes are: class 1 80%, all 80%. All scores are 80%, while class 2 60%, 70%, 80%, 90% and 100%. The range of measurement in class 1 is 0. जो रेंज है मेजरमेंट की क्लास 1 की वो 0 है, जबकि रेंज जो क्लास 2 की वो है वो कौन सी है, 40%. 100 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 40. Simply knowing that fact gives a much better understanding of the data obtained from the two class. In class 1 the mean was 80, जो मीन है क्लास 1 का वो 80 है, एंड the range was 0 और रेंज जो है उसकी 0 है. बट इन क्लास 2 the mean was 80, इन क्लास 2 के अंदर जो मीन था वो 80 था और उसकी रेंज कितनी थी, एंड रेंज वाज 40, उसकी 40 जो है वो रेंज है. द रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड वेरिएबिलिटी कैन बी ग्राफिकली शो एज. जो ताल्लुक है रेंज का और वेरिएबिलिटी का उसको हम ग्राफिकली ज़ाहिर कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज़ ए लार्जर रेंज. जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ए है उसकी रेंज जो है वो लार्जर है, ज़्यादा है, एंड मोर वेरिएबिलिटी और उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा है दैन डिस्ट्रीब्यूशन से. बी बिकॉज ओनली द टू एक्सट्रीम स्कोर्स, दो एक्सट्रीम के स्कोर हैं और यूज तो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटिंग द रेंज, इन रेंज के अंदर. हाउएवर इट इज़ ए क्रूड मेजर, इसको हम क्रूड मेजर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए एंड पी इज सेम. जो रेंज है ए और बी की वो एक जैसी है. आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज़ मोर वेरिएबिलिटी. अगरचा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ए की वो उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इट इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ dispersion and is based on the value of range. It is also called range coefficient of dispersion. It is defined as coefficient of range xh minus xl divided by hx plus xl. Let us take two sets of observations. हमारे पास दो observations हैं. Set A contains marks of 5 students in mathematics out of 25 marks. Set A जो हमारे पास है उसमें 5 स्टूडेंट्स जो हैं, 5 तालब इल्म जो हैं वो 25 में से 10 मार्क्स लेते हैं, 15 लेते हैं, 18, 20 और 20. ग्रुप बी कंटेन मार्क्स ऑफ सेम स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100 में से ग्रुप बी के अंदर 5 स्टूडेंट्स, वही 5 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स 30 हैं, 35,
25 और 50 हैं. Coefficient of range subject set A mathematics range is 20 minus 10 is equal to 10. Coefficient of range is 20 minus 10 divided by 20 plus 10 is 0.33. Set B English 50 minus 30 is equal to 20. 50 minus 30 divided by 50 plus 30 is 0.25. इन सेट ए दी रेंज इज 10. सेट ए के अंदर जो रेंज है वो 10 है. एंड इन सेट बी दी रेंज इज 20. सेट बी के अंदर जो रेंज है वो 20 है. अपेरेंटली इट सीम्स बज़ाहिर ये दिखाई देता है एज इफ देयर इज ए ग्रेटर डिस्पर्शन इन सेट बी. अगर सेट बी के अंदर डिस्पर्शन ज़्यादा है बट दिस इज नॉट ट्रू. लेकिन ये ठीक नहीं है. द रेंज ऑफ 20 इज सेट इन सेट बी इज फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशंस. जो रेंज है सेट बी के अंदर 20 के फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशंस, ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की वजह से. एंड द रेंज ऑफ 10 इन सेट ए इज स्मॉल ऑब्जर्वेशंस. दस 20 एंड 10 कैन नॉट बी कंपेयर डायरेक्टली. 20 और 10 को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता. देयर बेस इज़ नॉट द बेस. उनकी जो बेस है वो बेस इज़ नॉट द सेम, वो एक जैसी नहीं है. मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर आउट ऑफ 20. जो मैथमेटिक्स के नंबर हैं वो 25 में से हैं. एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर आउट ऑफ 100. और मार्क्स जो इंग्लिश के हैं वो 100 में से. दस इट मेक्स नो सेंस टू कंपेयर 10 विद 50. तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि हम कंपेयर करें, मुआवजा करें 10 का 20 के साथ. व्हेन वी कन्वर्ट दीज टू वैल्यूज इनटू कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जब हम इन दोनों को वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर, वो सी दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सेट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेट बी. जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है ए का वो ज़्यादा है बी से. दस देयर इज ग्रेटर डिस्पर्शन और वेरिएशन इन सेट ए. द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आर मोर स्टेबल. जो नंबर हैं इंग्लिश के अंदर वो ज़्यादा स्टेबल हैं दैन देयर मार्क्स इन मैथमेटिक्स के मार्क्स के लिहाज से. मीन डेविएशन. इफ डेविएशन इज द डिफरेंस ऑफ ए स्कोर फ्रॉम इट्स मीन. अगर डेविएशन जो है वो मुख्तलिफ होती है, इस डिफरेंस वो फ़र्क है ऑफ ए स्कोर फ्रॉम इट्स मीन, उसके मीन से. एंड वेरिएबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द स्कोर डिफर फ्रॉम देयर मीन. देन समिंग ऑल द डेविएशंस एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ them should give us a measure of variability. The problem thought is that the deviation sum to 0. However, submitting the absolute value of deviations before summing them eliminates this problem. Thus, the formula for the MD is given below. MD mean deviation is equal to sigma x minus x bar divided by n is equal to sigma d over n, where d is equal to x minus x bar and n is the number of observations. MD mean deviation about median summation x minus median divided by n is equal to sigma d divided by n, where d is equal to x minus median and n is the number of observations. Variance is another absolute measure of dispersion. ये dispersion को मालूम करने के लिए एक दूसरा जरिया हमारे पास. It is defined as, इसकी तारीफ यूँ की जा सकती है as the average of square difference between each of observation in a set of data and mean. For example, a sample data, the variance is denoted by S2. And population variance is denoted by sigma square. That is, sigma square is equal to summation xi minus x bar square divided by n. Thus, another name of the variance is the mean of the square deviation about the mean, or more simply, the mean squares. The most with the ms is that its unit are squared and thus represents space rather than a distance on the x-axis like the other measures of variability. Variance is another absolutely measures of dispersion. It is defined as average of the squared difference between each of the observations in a set of data and the mean.
Standard deviation. The standard deviation is defined as the positive square root of the measures of the square deviations taken from arithmetic mean of the data. A simple solution to the problem of the MS representing a space is to compute its square root. Since the standard deviation can be very small, standard deviation बहुत कम होती है, usually reported with 2 to 3 more decimals of accuracy than what is available in the original data. तो इसको हम 2 या 3 decimals के साथ बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं what is available in the original data. The standard deviation is in the same units. जो standard deviation है वो same unit में होती है as the units of the original observations. If the original observations are in grams, अगर original observation जो है वो grams में होती हैं, the value of standard deviation will also be in grams. जो value होगी standard deviation की वो भी ग्राम के अंदर होगी. The standard deviation plays a dominating role for study of variation in the data. It is very widely used measure of dispersion. It stands like a tower among measure of dispersion. As far as the important statistical tools are concerned, the first important tool is the mean x and the second important tool is the standard deviation. It is based on all the observations and is subject to mathematical treatment. It is of great importance for the analysis of data and for the various statistical inferences. Properties of variance and standard deviation always positive. ये positive होते हैं या फिर zero होते हैं. Equal zero when all scored are individual. ये zero के बराबर होते हैं जब तमाम score individuals के एक जैसे होते हैं. Identical, there is no variability, तो इनकी variability नहीं होती. Like the mean, they are sensitive to all scores. Mean की तरह ये तमाम scores के ये sensitive होते हैं.